drag and select the position keyframes, and you can press F9 on your keyboards. So what this does is it gives it a ease animation. So if you see the animation, it's a little different than it was before. Earlier it was like this. So if I need to show you the difference in the graphs, okay? The graph currently is like this. It's moving like this. It's moving. Earlier it was moving in a linear way. Does everyone know what linear is? Straight, Look constant at the curve. graph right now. It's moving in a linear way earlier, but once we select them and press F9, it makes the graph more smooth. Okay. What I can do is select the graph by dragging, and if you see these two yellow dots, we can drag them to the center, okay, to change the graph. Now, as you can see, the graph has changed. So what this graph is talking about essentially is that यहाँ से ये टॉकिंग अबाउट पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन का ग्राफ है। तो पोजीशन शुरू में बहुत धीमे जाएगी एंड इट स्पीड्स अप, ये बहुत तेज हो जाएगा एट द सेंटर पॉइंट, और फिर वो वापस से धीमे हो जाएगी। तो अगर हम इसको प्ले करें तो ऐसा दिखेगा, क्योंकि शुरू में बहुत स्लो है और उसके बाद एकदम से तेज हो जाएगा और फिर वापस से स्लो हो जाएगा। ग्राफिंग समझ में आई सबको? बहुत बेसिक ग्राफिंग है। Uh, can you just like how do you change the graph again? Can you just tell ओके, me? सो आई स्टार्ट अगेन। ओके, फर्स्ट विल मेक अ पोजीशन कीफ्रेम लाइक वी डिड बिफोर। पहले जैसे बनाया था वैसे ही करेंगे, एक पोजीशन कीफ्रेम बनाएंगे और नॉर्मल साइज को मूव कर देंगे। ठीक है, अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे बाय ड्रैगिंग। ठीक है, ये ड्रैग करके सिलेक्ट करना सबको आता होगा माउस से होपफुली, ये अपने टच पैड से भी कर ही सकते हो इसको। हाँ, यू कैन डू दैट एंड यू नीड टू प्रेस F9 एट द टॉप ऑफ योर कीबोर्ड, F9। ओके, तो इससे ये की फ्रेम की ये ऐसा स्टाइल हो जाएगा, डिफरेंट हो गया ना थोड़ा। पहले रोम्बस सा था, अब एक आर ग्लास सा स्टाइल आ गया। सो Right. इनको आप सिलेक्ट करना है। वंस अगेन यू हैव टू सिलेक्ट देम वंस अगेन। यू वंस देयर आउटलाइन ब्लू, यू कैन क्लिक दिस आइकन ओवर हियर, द ग्राफ आइकन, राइट। जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा एक ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, वापस से एक बार ड्रैग करना होगा जिससे कि ये दो येलो डॉट्स विजिबल हो जाए। जब ये दो येलो डॉट्स विजिबल हो गई, दैट मीन्स वी कैन मूव देम। तो एक लेफ्ट वाली को हम लेंगे। लेफ्ट वाली, दिस इज बेसिकली वेयर योर एनिमेशन इज स्टार्टिंग एंड दिस इज वेयर योर एनिमेशन इज एंडिंग। द फर्स्ट वाइट स्क्वायर, दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स, सेकंड वाइट स्क्वायर इज वेयर इट एंड्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ कि मेरे को बहुत फास्ट चाहिए, तो मैं इसको इधर की तरफ मूव कर दूंगा और मैं इसको भी इधर की तरफ मूव कर दूंगा। तो अब क्या होगा, इससे शुरू में बहुत फास्ट हो जाएगा, फिर बहुत धीमे हो जाएगा एंड में, एज यू कैन सी, राइट। मैं इसको यहाँ से थोड़ा लंबा भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस देखो। पहले अगर मैं पहले देखूँ कैसा था। So when we like created it, it would be a straight line when we create the when for the first time. जब हम पहले बनाएंगे, जब अगर हम F9 दबाने से पहले अगर देखें, ठीक है, F9 दबाने से पहले वो लीनियर लाइन होगी, लीनियर मूव कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, बिकॉज Oh, sure. हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करे। अगर मैं इसका ग्राफ अभी देखूं तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जब मैं इसको F9 प्रेस करूंगा तब ये मेरे को wait, just a second. Okay, there it is. एक सेकंड कुछ ले जाना है। हाँ,
Okay, now it's back. As you can see, we can see the graph now, right? Now, once I move it to the right side, that means it's gonna start out very slow, and towards the end, it's gonna get very fast, as you can see. But to make the most smooth animation, I always prefer to make it fastest in the center. So it gives it a very smooth animation because it starts off slow and it ends off slow as well. As you can see, it makes a very smooth animation. Of course, it's not visible on Teams because it does not show the entire thing. But once you make it on your own, you can see the difference of what graphing makes, right? Does anyone have any doubts regarding graphing? Karthik, yes. मेरे graph it's showing another type of graph. It's like not Okay. So really. what you can do is right click and you need to Hmm. switch to edit speed graph, not value graph. अच्छा. Okay. Okay, ठीक है. Okay, आ गया. Thank you. Good From question. there, the edit speed and To value. open the graph once again, you right click and you always have to select edit speed graph. Wait, If it अगर ऐसा ही दिख रहा है तो उसका मतलब आप स्पीड ग्राफ पे हो क्योंकि वैल्यू ग्राफ ऐसा दिखता है and you should use speed graph. It's more easier to understand as well. the value graph changes like the value of the keyframe. Yes, Okay. but for what we're working right now, speed graph पे ज़्यादा काम करते हैं. Okay. Okay, so I'm seeing no doubts except this. So I think what you guys can do is you can go home, try it out with different shapes, text, and videos, and see what you can come up with. You can make fade in and fade out animations for videos. I'll show you a basic one. This is very common, right? Um, fading in is used a lot, right? So I'm gonna open the drop down, go to transform opacity, set it to 0 at the start, and maybe then 10 frames later, set it to 100. So it will create a fade in animation. We can increase the length for it. So I like you guys to try it out on your own, right? Maybe with what you've learned in the last class and combining it with this, you should get something. Okay, so I think that's enough for today's class. Now, in the last session, I'm going to talk about some more complex things, something that's come with it, something that, maybe alpha matting. I'm going to talk about alpha matting. I'm going to talk about how you can make 3D animations in After Effects as well. So that is what we're going to talk about in the final class. If you have any doubts, you can Last message me out. on this. What? Last out. Just last out. If you want to move an object like on the y-axis, like upwards and downwards, is it done in the positions like right value or in the scale? Okay, you should. So when we make a shape, right? I'm going to make a new shape right now. And I open the position properties. This is moving it vertically, Like, and this is moving it horizontally. oh, yeah. So basically x-axis, y-axis. Got it? Was that your doubt? Yeah. Okay. So that's it, everybody. Thank you for joining. You can message any doubts that you want on my Discord or on my WhatsApp. Thank you, everyone. You can leave the meeting now. What about the Adobe that thing that it was showing that you have a 5-day free trial, what to do and Are you on a Mac? hmm? Are you on a MacBook? No, I'm on Windows. Okay, it's showing 5 days. It says Now, that your free trial is expiring in 5 days. This is not genuine. okay.